I think let's delve deeper into how you guys started your entrepreneurial journey. Like, let's start with Ankit. Like, you said you were 22 years old when you started. So how did you get the idea कि मुझको HR agency, HR company खोलना है? So I'd worked on the other side of the table to begin with, and I dealt with companies or consulting firms being on the other side of the table. So having said that, I used to wonder that how would it be like to be on the other side, to be running your own thing, and when I used to see these people, I used to get really inspired. And पैसा टाइम पे मिलता था क्या? तो हमने काफी नीली किया। आपके जो Fortune 500 है ना, they are very particular. बट आपके ऐसे काफ़ी ये भी है, ऐसे ब्रांड्स हैं कि उनका लोगो का इतना पावर है आपकी कंपनी में that it works as a magnet to bring on other clients. So in such a situation you do not really worry about कि इनका पैसा टाइम पे आएगा नहीं आएगा. So like you said कि भाई हाँ, हमारा थोड़ा डिले हो ही जाता है. हाँ. And the problem is कि I mean there are many a times, especially in IT, बंदा 3 महीने का मतलब 3 महीने एक दिन और बोलता है सर मैं बीमार हूँ और दूसरे दिन से आता ही नहीं है. So how, what's your experience? Like what exactly is your business model, revenue, and how do you take it forward? Like how do you run the company? How do I run the company? Yeah. That can take ages for me to answer because there is no specific formula that you can apply on how do you run your company. Yeah. Every quarter there are new things that have to be implemented, things that you have to do away with. So that's a constant thing. The hiring trends, they change. The company requirements keep changing. For a particular role for which there has been a lot of demand in the last 2 months, 3 months, or maybe over a year, it sizzles out the very next year. So you have to go back to the table many and often and then rework your strategy. So there is no specific formula or a specific way that this is A plus B, the whole square is equal to A plus B. वो ऐसा नहीं रहता है, वो change होता रहता है. So from what I understand, you have clients which are Fortune 500 companies and you supply them with skilled labor. Yes. Right? Manpower. Okay. Correct. So and you charge money from the Fortune 500 company. Okay. So you have built a very traditional business approach and you have grown it over the years. Grown it over the years by means of service delivery, by means of excelling in terms of what the client requires. There's a lot of competition, and even when I started off, there were cash-strapped companies which were already out there in the market, and they were working with the who's who, the big ones. And over a period of time, if you keep hammering the nail the right way, and you keep doing it on and on, it'll sink into the wall gradually. And when it does, there's years of hitting it the right way that has led you to this point. So having said that, I don't know what your question is, but yes, we've been able to, by means of consistent delivery, I shouldn't say this, it might sound arrogant, but then we've been able to take the place of those over there in our place before I started. So that does give satisfaction to an extent, but not something, that one should take to his head. Yeah, correct. So the quality of service was your secret sauce. Yes, everyone in this industry is replaceable and nothing is permanent. So whatever it is that you've been doing, you should continue doing that. And if at all, you should try to, explore avenues or ways so that you can do it even better, so that you ensure that you're there, because it is such a volatile and a fragile place to be in that you can be replaced. Yeah. And just like that, and you wouldn't know that you've evaporated. That's the risk of being an entrepreneur. You need to keep innovating, otherwise you will be easily replaced. Yep. How about you? Like, what clicked the idea that I want to start Growfitter as a founder? I mean, his business is very traditional, but our business is very untraditional. Yeah. जब भी मैं किसी को बोलता था ऐप डाउनलोड करो और आपको फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे, मतलब बंदा पहले पूछता है आप पैसे कैसे कमाते हो. तो मैं बंदे को बोलता था यार तू चेक देगा तो मैं देखो मेरा बिजनेस मॉडल बताऊंगा. बट आई थिंक we were on Shark Tank also, वहाँ पे भी हमने बिजनेस बताया. बट नाउ आवर बिगर बिजनेस इज दैट हमको कस्टमर को अक्वायर करना है, और इंडिया में आज कस्टमर एक्विजिशन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव. मतलब आज मिनिमम अगर आप कोई भी अगर एक फिनटेक प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो $1,000 तो मिनिमम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है. तो विद दैट मुझे तो $10 मिलियन की फंडिंग चाहिए, नहीं तो मैं कोई धंधा कर ही नहीं सकता. तो
हमने सोचा हाउ डू वी कट डाउन द कस्टमर एक्विजिशन. द इंडियन ऑडियंसेस आर वेरी इम्पेशेंट, Difficult to please also. एब्सोल्युटली. आप उसको कुछ भी दे दो, वो आईफोन भी दे दिया तो वो बोलेगा कवर क्यों नहीं दिया. Okay. So from what I understand, so first step was to raise funds and acquire customers by giving free rewards. एब्सोल्युटली. Correct. तो ये सी हमारा स्टार्टअप वाज अ बर्न एंड अर्न मॉडल. तो इनिशियली आपको बर्न करना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ कंज्यूमर लेड बिजनेस. सो यू हैव टू एक्वायर कस्टमर्स के लिए आपको फंडिंग चाहिए. Correct. एंड ये दिस इज मोर लाइक अ वेंचर बिजनेस कि आपको यू हैव टू स्केल वेरी फास्ट. Yeah. सो एंड देन यू हैव टू रीच अ सर्टेन स्केल एंड देन यू बेसिकली स्टार्ट मेकिंग मनी. So the risk of success is also very रिस्क है तो इश्क है. रिस्क तो बहुत है. आई थिंक ऑल ऑफ अस विल अग्री कि वी हैड नियर डेथ एक्सपीरियंसेस. मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए थे. मेरे को आज भी याद है, मैंने डेस्परेशन में इन्वेस्टर को बोल दिया कि सर मेरे अकाउंट में, उसने मुझे 50 लाख का अग्रीमेंट साइन करके दे दिया था, मैं दे रहा हूँ तेरे को पैसे. और हम लोग टीम में सब थोड़ा शांति में बैठे कि यार अब पैसे आ जाएंगे क्योंकि अगले महीने की सैलरी नहीं देनी है. और 1 लाख मेरे अकाउंट में थे और मैंने उसको फ़ोन करके डेस्परेशन में बोल दिया कि सर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए ही है. एंड ही बैक्ड आउट. एंड मतलब मुझे आज वो दिन याद है और मुझे रात को नींद नहीं आई कि मैं पैसे कैसे दूंगा अगले महीने के. बट था वो डिटर्मिनेशन था. 300 स्क्वायर फीट में हम वैसे ही सो रहे थे. हमने बोला क्या होएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वी विल फिगर इट आउट. बट वही है, कहाँ से तो भी अचानक आई कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन एंड आई गॉट दिस इन्वेस्टर. एंड 1 घंटे में, मुझे आज भी याद है, फॉर मी दैट इन्वेस्टमेंट इज बिगर देन ऑल दी अदर इन्वेस्टमेंट्स. उसने मुझे 25 लाख का चेक लिख के दिया था 1 घंटे में. तो मुझे आज भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मुझे सुन के goosebumps आ गया. हाँ, तो इट इज सो आई थिंक कि वो जब तुम शिद्दत से चाहते हो तो चीज़ें हो जाती है. correct. Also, we have seen you on Shark Tank and receiving investment from Aman Gupta. How was that experience having Aman Gupta as an investor on your startup? No, he's a fantastic human being. I mean, I've interacted him very often and he's very easy to approach. तो एक तो था जो टीवी पे दिखा, certainly शार्क टैंक जैसे दिखता है वैसा है नहीं. उसमें बहुत सारे, मतलब इट्स लाइक अ रियलिटी शो. तो आपको बहुत अप्लाई करना पड़ता है. 3 बड़े बड़े राउंड्स होते हैं, फिर आपको फिल्म सिटी बुलाते हैं, वहाँ पे 3 दिन की रिहर्सल होती है. और उसमें भी इतने सारे स्टार्टअप्स पिच करते हैं. आपका नंबर टीवी पे आएगा नहीं आएगा तो लाइक नसीब भी है उसमें. एंड विद अस देयर वर 60,000 स्टार्टअप्स दैट अप्लाइड एंड ओनली आई थिंक सम 67 स्टार्टअप्स गॉट फंडेड. तो इट इज़ क्वाइट ओवरवेलमिंग. बट एक बात है कि वहाँ पे कोई रीटेक नहीं होते. तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने वाला, अगर मैं भूल गया, मैं इतना रट के बैठा था और मेरे को पसीने छूट रहे थे और मेरा वो मेकअप सब उतर गया था. मैंने बोला यार गुफो. और हमारा सीजन 1 था तो मुझे एक्चुअली आई डिडंट इवन नो जजेस कौन कौन से थे. मेरे को नाम भी नहीं पता थे क्योंकि हमको 1 दिन पहले दिए थे. आपने उधर हाँ, मेरा इनफैक्ट वो भी हो गया था. मैंने अमन का अनुपम बोल दिया था एंड इट वाज लाइक हिलेरियस. और बेस्ट पार्ट क्या था ना कि सो वी आर नॉट फ्रॉम द मीडिया इंडस्ट्री. तो जब हम गए थे तो द लाइट्स वर सो बिग कि मेरे को पूरा काला है, मुझे कोई शार्क दिख ही नहीं रहा था. मैं एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आई एम पिचिंग इन द डार्क. So but all things went well. Yeah, I'm glad it went well. So from what I see, आपका online presence is very strong. But Ankit जी, आपका online presence is not as strong, but आप एकदम traditional business use कर रहे हो. And he is leveraging his online presence for his business. Right. तो आपको ऐसा लगता है कभी कि आप भी online आके you would want to increase your presence and leverage it for your business? See, kaisa hai na, the line of business that he is operating in and the one that I'm operating in are very different. Like for example, if I were to talk about my book, Just Link for example, Yes. and if I were to market the book, then I would require personally, as an author, a very big online presence. So it depends product to product. As far as my human resources business is concerned, Transcendence Human Resources, I really do not require a very big online presence over there. So there's this company called Randstad. I'm sure everyone must have heard about it, and they happen to be, one of my competitors. So even a Randstad wouldn't have a very big online presence because it doesn't entail it. It doesn't call for it. So his product, he requires that visibility. I would not completely agree on this. मुझे लगता है आज कोई भी बिजनेस हो, whether traditional हो या ना हो,
आपका डिजिटल प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस, आपका नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है. Networking for sure is important. I would agree. But Even digital, in fact, I have seen, a lot of reels where, offices are actually creating reels to hire new employees. You have to do something, innovative. नहीं तो I mean, क्योंकि this is a digital era that we are living in. I mean, this is my opinion. It is. And I agree I'd agree 80% of what you said. Naya employees लाने के लिए, of course, you require an online presence, but nevertheless, I feel that if the employees who are already working in your organization, the 120 people that I have working, they are the they are the mouthpieces who would go and talk about, the culture or the experience that they are getting in my company. Because my need is not 200 employees immediately. Right now, the bandwidth that I have, I perhaps need to hire 35 more. For that, the amount of money that I might have to invest on these online activities doesn't really justify that. The demand doesn't justify the cost. No, I think between the two of you, the bigger difference is you're a consumer business, you're a enterprise business, right? For you, it's more important to be in the face of your consumer much faster. I don't completely agree to this. There are a lot of enterprise business also these days, who are doing very good going online, creating these, funny reels. So even to his question, like, I've seen a lot of HR companies now coming up with very quirky. In fact, even in the US, they actually are using TikTok and, other of these digital platforms to actually showcase, what are their offerings. Fair enough. But the distinction being, and this is something that one of very senior person in the enterprise space who's built $1 billion plus company used to always tell me, can't take his name, but enterprise अगर आप बेच रहे हो ना, तो आपका customer, you need to build such a personal relationship with your buyer in that enterprise. Enterprise कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, buyer आपका जो है, you have to build such a personal relationship with him कि अगर कभी उसको कोई तकलीफ हुई ना, तो अपने स्पाउस को फ़ोन नहीं करेंगे, वो आपको फ़ोन करेंगे, रात के 12 बजे भी आप ही को फ़ोन करेंगे. इफ़ यू गेट दैट रिलेशनशिप ना, वो कस्टमर आपका है. आई थिंक दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिजिटल प्रेजेंस फॉर एन एंटरप्राइज बिजनेस इज डिफरेंट कंपेयर्ड टू द इम्पैक्ट दैट इट हैज फॉर कंज्यूमर. कैसा आ रहा भाई मेरे इसमें बहुत परफॉर्मेंस बेस्ड है यार, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड है. मैं कितना भी मार्केटिंग कर लूँ, कितना भी हो अल्लाह मचा दो ऑनलाइन, बट क्या होता है ना, जब क्या बोलते हैं, जैसे कि डॉइच वाले जब मेरे को देंगे काम देंगे, तो लोग सिटी से पूछेंगे, यार भाई आपके साथ 10 साल से काम कर रहे हैं, परफॉर्म कैसा कर रहे हो, बोल देंगे ना ऐसा मत जा, बकवास कर रहे हैं, हम इसको निकालने वाले हैं. तो खत्म हो जाती है वहीं पे बात. तो बहुत छोटा सा वैसा इंडस्ट्री है. यहाँ का बंदा वहाँ काम कर रहा है, वहाँ का यहाँ, दे ऑल नो ईच अदर एंड नो. ट्रांसेंडेंस का जो ओनर है अंकित, उसको पता है, डॉइच वाले को पता है, ऑल्दो कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, बट उसके जो दूसरे हैं, सिटी है, ये हो गया, जेपी हो गया, उनको वहाँ से पता है कि अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है. तो मैं कितना भी वहाँ पे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे डाल दूँ, ये वो एक कॉल से पता चल जाएगा, ये सब फेंक रहे हैं. ऑनलाइन रिव्यू नहीं, ये कॉल पे रिव्यू है. That's a very great opinion. I mean, it sparked a healthy debate between your new startup versus a traditional business. I wouldn't call it a debate, but if you wanted one.